Hi, Kamiya. Oh, hi. Wasn't expecting you, especially on a holiday. What about Sunday Brunch? Not today. It's my day off. Lies. You never take a day off. Of course. Never missing my deadline. Tell us now, who are you hosting today? Today, everyone. Everyone? Yeah, everyone. Let me show you. Well, if you thought celebs were all about clean eating, well, they have shocked me with their crazy food stories. Weirdest dish you've ever had till date? I don't know I should accept that or not, yeah. Raw fish. Grasshopper? Rattlesnake. Frogs? Snails? Very tasty snails. Snails, and I actually really liked it. Horse meat and rabbit ka achar. I don't know, I should... Rabbit ka achar? I tried it for the first time, raw fish, but then I loved it. I loved it for so many years. I still love Japanese food. वो पूरे frogs दिख रहे थे कि वो frogs हैं और उनको वो बटर में और उसमें वो बेचारों को फ्राई किया हुआ था और वो ऐसे पड़े हुए थे. खाने के लिए पैसा तो होता नहीं था, पर क्या करें, चलो ब्रेकफास्ट होता था तो उसमें चाय बिस्किट, लंच में फिर चाय बिस्किट, डिनर में फिर चाय बिस्किट. I've had frogs, I've had snails, I've had. Is that weird? फूड भी बहुत हद तक R&D है, उसमें रिसर्च है, डेवलपमेंट है और इमेजिनेशन है. So Tapsi Pannu has eaten a grasshopper. Can you believe it? It's not something I'm very proud of. He's had horse milk. And it tastes like, soda. It burns all the food in your stomach, it burns all the fat in your stomach. As a bizarre, though, I don't even try to eat. If something doesn't look good, I don't eat it. Strawberry milkshake for the French fries. To be dipped. French fries with milkshake. It's really yum. But the appetizer that's the main course. The appetizer is 2 burgers. Sometimes 3. That's a palate cleanser. I've actually had steak, all vegetarian. My wife swears that the prawns that they make, which is only out of vegetarian, is actually as tastier, if not tastier, than the real prawns. I think I ate a crocodile once. Oh, okay. I went to a restaurant called Carnivore in Africa. And they serve you all this kind of meat like rattlesnake. So snake. You've eaten a snake? Yeah, I mean. Wow. And if you think इनके खाने के किस्से काफी weird थे, well सच में थे. I mean, who eats rabbit का अचार और grasshopper? Let me tell you, they've also made me lol. మీకు మొత్తం తెలుగు బాగా వచ్చు కదా? కొంచెం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను అది Basically we said अरे माँ भी सिंधी में गाला है सुट्ठो डाडो सुट्ठो अरे went to Sindhi college चरी what is it मुई चरी हो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे. सांस कहाँ से ले और आगे का आप ही बोल दो. એટલા કાણા પાડીશ ને કે ખબર નહીં પડે કે હું કરું જ કે પૂ. That was good. કે પૂ. स्कूल में भी जब मैं बैठी होती थी क्लास में, अगर आप मुझे ऐसे देखते तो मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या है. आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ माय नेक्स्ट मील. बचपन में तो बड़े छोले भटूरे पहले होंगे, also butter chicken. हाँ, पहले क्या होता था कि यू ईट और लस्सी पी के बैठ जाना शाम तक, आप हिल नहीं पा रहे हो. आई डोंट थिंक दैट्स हेल्दी. लहानपणी बघितलं होतं, लॉलीपॉप खात होतं, छोटी चड्डी घालत होता, लई मस्ती करत होता. डाइटिंग करने से अगर एक्टिंग अच्छी हो जाए तो मैं ज़रूर करता. मुझ में टैलेंट है, मुझे काम दे दो रमेश जी. तो एक दिन पूछा मेरी वाइफ ने, मैं भी वहाँ खड़ा था, कि तू दिन भर नाचते रहता है हमेशा. तो बोला नहीं, वो जब कंटाल आता है नाच लेता हूँ. तो फिर वो बोली कि यार कोई कंटाल आता है तो नाचता है. तो हमें लगा कंटाल कोई व्यक्ति है. बाद में मालूम चला कंटाल मतलब जब बोरियत होती है तो नाच लेता हूँ. आप अपने दोस्त ललित को प्यार से क्या बुलाते हो? यार कैसे ये मतलब आप लोग बीप करोगे या मैं बीप के साथ बोलूं? आई थिंक मैं बस ये करूंगा तो सब लोगों को दिमाग में सुन जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ. So, अब से हम बोला करेंगे वो नहीं, बोला करेंगे लवली ललित. लवली ललित. If you had to name a horror film starring 3 of us and our name start with K, क्या नाम रखोगे? कमोलिका. काकी का. हाँ, काकी का. कमोंजलिका. Come on. I will go with Kamolajika. Kamolajika. I feel like this table should have ढोकलास. हर हफ्ते मतलब एक बार तो बनता ही है सिंधी कढ़ी. Really? Yeah, wow, that's interesting. बनता ही है. But it'll be a Nepalese version because
My cook is a Nepalese. It's some really weird version. So when I go to a real Sindhi's house and I have Sindhi curry, I'm like, ये Sindhi curry नहीं है. You like Puran Poli? I love His son. my son. His son. तेरा बच्चा नहीं है. I love Chinese. Like I would eat Chinese 365 days of You the year. mean Chinese food? Chinese. Just to clarify. That was a nice one, mate. मैं तो कर्ली टेल्स में आ सकती हूँ, ठीक है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को मिल चुका है एक सर्टिफिकेट. एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. तो ठीक हुआ, मत सुनी. नहीं सुनता तो मत सुनिए. Today, I went the other day and I was like in my hoodie and I was like, oh, samosa pav. I got like 6. Why were you doing this to the samosa? Because I was like cooler. Like, chola samosa pav देंगे. Like you went like this, bhaiya samosa pav. What are you doing? 3 things you won't want to sit on. It's a very vulgar question. I refuse to answer it. A porcupine. And your laptop. And my laptop, yes. 3 things you say when you're really angry. My favorite word is बेवकूफ. बेवकूफ. अच्छा. Don't swear anymore. I just say things. I use English properly. Like, I'm really disappointed. And that's so frustrating. F word, frustrating. I love it. Yeah, exactly. I like nice old Punjabi swear words. Like? What? जती रह जाए. Get lost. Okay. I'm just guessing. What is it? Jati? जती रह जाए. Jati Reje. That's what I'm going to do. Jati Reje. जती रह जाए. जानी कैसा सरनेम है? सिंधी. ओह, होता है. हाँ जी. नीलानी. हाँ जी. एक फिल्म किया था मैं. ये जो अच्छा लग रहा है तुम्हारा सूट, क्या है ये जो पहने हो, कौन कंपनी है? तो बोलता है ये अरमानी, जॉर्जिया अरमानी. तो मैं पूछता हूँ यार ये जो सिंधी कंपनी है कोई, अरमानी को ना वो भूटानी से उसी ने खुद बोला. फूड ब्लॉगर, हम हर चीज डॉक्यूमेंट करते हैं. जब तक हमारे सेलिब्रिटीज खाते नहीं हम शूट करते रहते हैं. And being a food hogger, हम सब चीज खाते हैं. मेरा बैड लक रहा है कि मैं अकेला नहीं, बट अब मैं चाहता हूँ कि अब अकेला घूमूं. आपको शौक है सोलो ट्रिप्स का? ओके. जॉइन कर्ली टेल्स, हम बहुत घूमते हैं. रुको यार, आई थिंक ऐसे हो नहीं रहा है. इट शुड बी लाइक दिस ओनली. यूज ओनली वन हैंड. ये तो समोसा मोमो है. गाइस, दिस इज अ न्यू शेप. इट्स कॉल्ड समोसा मोमो. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. ये मैंने अभी इजाद किया है. अब मेरा ऐसा था कि मैं यूनिफॉर्म में छोटा बच्चा, तो कभी कभी जेंट्स कंपार्टमेंट में जगह नहीं मिलती थी तो मैं लेडीज़ में चढ़ जाता था. ग्रेजुअली 5th 6th 7th 8th में पहुंच गया, हाइट बढ़ गई. तो एक दिन मैं नॉर्मली गर्दी देखी और मैं लेडीज़ में चढ़ गया. और वहाँ पर औरतें शुरू हो गई, 2-4 निकालो इसको, मार इसको, चप्पल से मारो, ये कैसे आ गया इधर. मैं बोला कि आंटी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, झूठ मत बोलती. बोला अरे मैं सच्ची स्कूल स्टूडेंट हूँ मैं. वो दिन है तो मैं उतरा और मैंने कान पकड़ लिया, चाहे ट्रेन मिस हो जाए. Really scared of water. Oh, are you scared of this? मैं शुरू में आया था, एक ऑटो वाले ने दूसरे ऑटो के अंदर ऑलमोस्ट बैंग किया. तो अपना ऑटो वाला ऐसे उसको देखता, कहता क्या? उसने बोला कुछ नहीं, सॉरी. मतलब ऐसे चेहरे में सॉरी बोलो. उसने ठीक है, ओके. तो ना सटल में क्लोजअप में खेल गए दोनों. ये दिल्ली में यही चीज होती तो मतलब 5 लोग इकट्ठे हो जाते, साइड्स हो जाते, या तो मतलब एक बोतल, हॉकी स्टिक, मतलब अग्रेशन वहां पर आई वाज यूज्ड टू अ होल लॉट मोर. तो एक तो ऑटो वाला यहाँ पे मीटर से जा रहा है, वो हैरान, ऊपर से पोलाइट भी हो रहा है. So kind of you. My Hindi had gotten worse when I went to Bombay. Like जाने का, आने का and all that. But you know, kanda batata. Like I still say pyaz aloo. I cannot say kothmeer instead of dhania. Can you teach me a slang or two that will make people believe that I'm a local? Nobody will believe. जैसे मगा है, मगा ही लिया. Maga. Maga is son. I'm gonna use this when I come to Bangalore. You use this, they'll follow you till wherever you're staying. आपने बुला लिया तो हम आ गए. झेलो अभी. फूड और ट्रैवल recommendations की लिस्ट इन सब की भी काफी बड़ी है. तो अगर आपका चीट डे हो, is there a favorite street food joint in Delhi that you have for छोले भटूरे? हमारा प्लान था जाने का एंड वी थॉट कि रजौरी गार्डन में जाएंगे. एक जगह है जो दुकान है वहाँ पे, उस पे आसपास luckily I saw the photos on Google. And then I saw the street and I was like, अगर यहाँ पे पता चल गया कि हम आए हुए हैं तो छोले भटूरे तो भूल जाओ, घर भी नहीं आ पाएंगे वापस. Dheeraj used to be right there. The vada pav there. Yeah, the vada pav used to be amazing.
कैंटीन के अंदर भी खाना बहुत अच्छा होता था. There used to be like some really nice food. Samosas we used to have, and Amar Juice Center is like really close by, so we just walk across and go get ourselves something yummy to eat. So food was never a problem near Mithi Bhai. Pani puri, bhel puri, vada pav, I love it. the chutney sandwich, all that. So we've all actually when we And have during like, college, we grew up having Frankies. Yeah. As you can see, there's a very fancy salad that I prefer having every now and then. But my favorite is the mushroom dumplings. Yeah, let's have. Should we have? Absolutely, yes. Sadhguru pav bhaji. Oh, right. And their milkshakes, their sitafal Yes. milkshakes. They're a very close friends, family-owned Grand Central. The butter chicken there. I don't eat meat now, but I used to dig their butter chicken so much so that I used to tell Sudhakar uncle, who used to own the place, who still does, that please send me butter chicken. So all the Chemburites right now are nodding their heads in agreement. मुंबई की ख़ास बात यह है कि बहुत कम पैसों में भी खा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने जगह जगह पे यहाँ पे खाया है खाना. बहुत अच्छा खाना कम पैसों में, बट वो थोड़ा सर्च करना पड़ता है. जैसे बैंड्रा स्टेशन पे एक जगह थी, तो वहाँ पे आई थिंक 8-10 रुपए की बिरयानी मिलती थी एक प्लेट में. Oh really? हाँ, वो मैं खाता था और मुझे बहुत अच्छी लगती थी. अगर मेरे पास पैसे होते थे, मैं गोरेगांव में रहता था, तो गोरेगांव से ट्रेन करके यहाँ आता था और यहाँ से खाना खा के वापस ट्रेन में बैठ के फिर वापस जाता था. तो इतनी अच्छी लगती थी वो मुझे चीज़. और वड़ा पाव पसंद आया था आपको? सबको नहीं पसंद आता है. हाँ, मुझे, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे पाव तो पसंद नहीं. हाँ, वड़ा मैं निकाल के खा लेता था उसमें. बिहार का तो सब कुछ पसंद है, कुछ भी पसंद है. घर का बना हुआ सिंपल चावल दाल, लिट्टी बेहद पसंद है मुझे. अच्छा. हालांकि लिट्टी भी बिहार में ऐसे नहीं पूरे बिहार में खाई जाती है. जो हमारा रीजन है ना, हाँ जी, 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 6-7-8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ यूपी के भी हैं सटे हुए, जो भोजपुरी स्पीकिंग इलाके में लिट्टी का ज़्यादा चलन है. पूरन पोली इज़ मस्ट. एंड घर पर खीर के बिना तो मतलब होता ही नहीं है. पूरन पोली, खीर, आमटी, भात, दिस इज़ लाइक अ पेटेंट मेन्यू जो बनता ही बनता है. मेरे कॉलेज के बाहर वो डोसे के ठेले होते थे. शेजवान चीज़ डोसा. हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं ये स्ट्रीट फूड. उनको ये पानी पूरी और भेल पूरी, शेव पूरी, ये सब बहुत पसंद है. I order from Adab a lot. the biryani. The biryani, and they have like lovely different dishes which I never tried before. Jama. Jama and Chembur. Jama, the best gulab jamun in the universe. Yeah, are you from? I love the best. But then you have to have it. The thing is, now You have to have it fresh. You have to have it fresh. Actually, I've frozen it also. No. Friday you can't wait for this. Now you said it, it'll have to come. The thing is, you have to have it garam. big nice और जो शीरा होता है ना, उसके ऊपर होना पड़ता है. And you have to take it from the dabba and eat it like. Sunday brunch in Surat is like, I mean, you can't even imagine. Khaman, dhokla. There's something called locho. I mean, you will never be able to forget the taste. Mumbai, like I said, I've had sev puri. One of my favorites is Ram Sham in Khar. Yes. So I love Ram Sham, and there's one in Juhu 11th Road which is supposed to be really famous, and he uses kachi keri throughout the year. So he's, I think, known for that. To eat, like whenever we travel for work and all, we always like whichever place. Like suppose I'm in Kolkata, we'll definitely eat like machar jhol, and we'll eat all the Bengali delicacies. Or if we're in South India, so I like to or Rajasthan, then I'll eat lal mas, and so I am a big foodie. Even though people think that I'm not, but I love to eat. Have you guys ever had Sri Lankan food? I have. Oh, in Sri Lanka? Yes. Oh my god, it's too yum. Like seriously, I am like obsessed. I mean, there is one of my favorite dishes is this dish called lump rice. And you know lump rice? Oh my god, amazing. देखिए, इनको दिखाइए और अब आप इसमें से खा के बताइए कैसा है. मिर्ची भी है, कम है, ज़्यादा नहीं डाला हूँ. इसमें तो इन्हें फुल मार्क्स मिल गए. Not bad, Radhika. Not round. Hey, this is mine. And this is mine. Yes. और ये इसमें जो है ना फिलिंग, मुझे पता नहीं आप लोगों ने किसकी बनाई, बट यूजुअली इसमें बहुत अच्छी फिलिंग बनती है जिसमें कि अखरोट. अखरोट भी मनाली में होता है. तो उसमें अखरोट, अफीम दाना. ओके. They put अफीम in it. Yes. अच्छा. Yes, and
और कुछ हर्ब्स पड़ते हैं एंड इट्स वेरी टेस्टी। ये बहुत सारे घी के साथ खाया जाता है, राइट? यस। इसको स्टीम किया जाता है। इफ आई हैड लिटिल ऑयल लिटिल bit more. Sidhu is actually very tasty. I think ये भी तो होता है। मोदक, ये तो मोदक बना दिया। टेस्ट तो मोमो टाइप करेगा ना। Okay guys, rate. It's like मोमो मोदक। मेरा ज्यादा मोमो की तरह लग रहा है। प्लीज वोट, आयुष्मान का मोमो ज्यादा मोमो की तरह लग रहा है या मेरा मोमो ज्यादा मोमो की तरह लग रहा है? और अगर आप मुझे ट्रैवलहॉलिक समझते हो, well, these travel tales beat mine too. My favorite is Europe. Europe. I'm a beach person. Okay. Sun, sand, beach, water. I was dying for a holiday. Yeah. But I said this is a great way to sort of push the expenses of a holiday onto the producer. What are the odds? फिनलैंड में एक हमें कोई अपने कंट्री से आदमी ने मिला, एक सरदार जी मिले, उनका लास्ट नेम कोहली है. I was like, और कॉफी शॉप में, you know, but then he saw me and then he's like, मैं भी कोहली हाँ, मैं भी. I was like, यार पाजी प्लीज यहाँ पे छोड़ दो, फोटो वोटो मत मांगना. जो एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग में खाने में मिलता है आँखों को और स्वाद को और कानों को ना, वो हमसे कोई नहीं ले सकता. वो हमारे साथ चले जाना है वो अनुभव. तो एक्चुअल एफडी वही है. मैंने साउथ में जैसे बहुत सारी जगहें हैं केरला में जहाँ के खाना बड़ा फेमस है, और मैं चेन्नई तक तो होके आ गया हूँ, उसके आगे नहीं पहुँचा, लेकिन केरला वाले जाके मैं वहाँ का खाना खाना चाहता हूँ. बड़ा मैंने सुना है नॉनवेज बड़ा अच्छा बनता है वहाँ पे. अच्छा, और अब्रॉड कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं? मैं अभी तक टर्किश नहीं गया, वहाँ पे वहाँ का खाना मैंने बहुत सुना. Tyra is a city person, I am a countryside person, so there'll always be debates and arguments way to travel. Renting one of these lovely cottages in summer in the UK somewhere, or one of these mountain holidays, skiing and eating so which are your and top traveling. 3 travel places? I'll have to say Kustad, Maldives, and not London but England. Okay, London. Went to some really nice places. I remember this really beautiful place called Livigno in Italy, which was beautiful. We went to Zurich, which was also very, very nice. Then we went to Austria, Italy, and Switzerland. Those were the 3 places that we visited, and we were just riding on the routes. But it's like, oh, I have to go back to Delhi. You know, even though it's been 7 years since I've gotten married, or even though I've been here, you know, in Punjab for 2 years, I'll still say, oh, I have to go back to Bombay. Or so I think I'm still having to deal with what is home. But the good thing is I feel at home at least. Japan, I just love. And my God, I think the maximum amount of Michelin chefs are there. And we went to Kyoto. The food, the air, the culture, it's just so beautiful. I really loved it. I usually like to go where there's not too much crowd, and also I think Maldives or a beach kind of a place is somewhere I love to go. I feel very much at home in London. तो मुझे जब भी चांस मिलता है मैं वहाँ भाग जाता हूँ. My favorite is Europe. Anywhere in Europe is my favorite, and I do love Maldives as well. I keep going diving, like to Maldives, to Seychelles. I'm a complete water baby. So most of my holidays are around a place where I can go like diving and snorkeling. हम लोग recently न्यूजीलैंड गए थे, और वहाँ पे we went to Queenstown, और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है. तो we both love New Zealand. I did a solo travel to Maldives and I was telling you अभी कि didn't look खींच रहा था आपके इतनी मेरा tripod. All my friends were shocked. They didn't believe me that I'm traveling solo to Maldives. They were like, it's a honeymoon destination. It's a romantic destination. Why are you going alone? First time solo. I've been really planning to do it, and I did it for the first time. Yeah. But I wish I stayed in like smaller places, like hostels and stuff like that. It's a unique experience. Not hotels, because you'll meet people. Hostel, while it's very romantic that you all wake up in a dorm, you share a bathroom with 12 teenagers who've come like with different hygiene levels. I went for skiing. इटली के बॉर्डर पे उस छोटी सी काउंटी में कुछ भी नहीं, एक स्की रिजोर्ट और एक स्कूल है. तो मैं वहाँ से निकली. मैंने कहा अभी मेरे को ना ट्रेन लेके कहीं और निकल जाना है. और मेरा ना एक बंदा आके मुझे टकराया. मेरे पास एक पाउच था LV का, छोटा सा आगे मैंने लगाया हुआ था, एंड आई हैड अ बैकपैक पीछे. तो इतना शार्प वो बंदा था. आया वो, और मेरे पास पैसे थे, उसमें 2-3 हज़ार डॉलर्स थे और कुछ लोकल मनी थी और कार्ड्स थे मेरे, सब कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे. वो बंदा आया, मेरे पास सिर्फ इतना सा टकराया और चला गया. और फिर मैं उसमें चली गई अंदर, मैं बैठी ये सब करके,
और फिर मैं देखूँ मेरा टिकट वो सब, उसने सारा ही वो पर्स मेरा खाली कर दिया था. In a fraction of a second? Yes, in a fraction of a second. Just went to Ranthambore on New Year's, and Okay. I feel like I love animals. So to see animals in their natural habitat or natural state is very exciting for me. So either I've not been scuba diving, but I've been snorkeling. So I feel like anything to do with animals in their natural habitat. When we were actually on this road trip to Italy, we wanted to drive to Sorrento. But in the GPS, we put in the wrong town names. We drove 9 hours in the opposite direction to Salerno. Okay. And when we reached there, we're like, oh, we're in the wrong city. पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था कि एक तो साफ सफाई बहुत थी और जो भी आ रहा था वो हेलो करके जाता था, है ना. अगर कोई लड़की जा रही हाय हाउ आर यू ऐसे करके निकल जाती थी. मैंने कि क्या चक्कर है यार ये. बाद में पता चला कि यहाँ के मैनर्स की कल्चर ऐसी ही होती है, तो ज़्यादा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. I didn't know what I wanted to be in life, but one thing I knew for sure is मुझे travel करना था. And that's what I do. I get paid to travel. Like that's my job. Both of us. Yeah, same. हमारे comments में बहुत आता है that I look like you. Yeah, we But do for me look. it's a compliment. I don't know about you. No, but yeah. we do look similar. भी बहुत confusion होने वाला है, तो मेरे को लगता है बबल में लिखना पड़ेगा सर के ऊपर. सान्या कहाँ में रवीना है, करिश्मा है, रवीना है. बहुत अंदाज अपना अपना होने वाला है ऑडियंस के साथ. Only for you I do this, काम्या. Otherwise मेरे को बहुत गुस्सा आता है मेरे को खाना खाते हुए कोई रिकॉर्ड कर रहा हो और फोटो खींच रहा हो. मैंने लोगों की शादियों में जाके जब मेरे को कैमरामैन सामने दिखाया ना, मैंने उस पर चिल्लाया भी है कई बार, क्योंकि मैंने ये क्या बात होगी, मैं मुंह में खाना डालूं, वो देख रहा है कि मैंने कितना खाना लिया प्लेट में, क्या गया है इनके मुंह के. But only for you I let this happen. Thank you so much. I just hope it's not very hot though. Open your mouth. Okay. Definitely सिंधी कड़ी. मेरी मॉम ने बनाया क्या? नहीं. Because it's very very similar. Really? Oh, and you said your mom makes the best. So can I tell you something? Yeah. I'm Sindhi. And I have made this for you. Oh my God, this is amazing. Thank you. कोई तो रिव्यू कर रही थी आप कहीं किसी रिजॉर्ट होटल वगैरह का कहीं का, तो मैंने देखा था. अच्छा. तो मुझे लगा भी था कि यार कितना बढ़िया जॉब है इस लड़की का, कि घूमते रहती है और रिव्यू करते रहती है. So you have put me in a position today that I have rarely found myself in, because I like to be so focused on my food, but I'm also really interested in our conversation, and my brain right now is short circuiting because it's like, I'm so sorry to put you in that situation. हैं यहाँ पे मैं काम्या जी के साथ हूँ और हम कुछ चटोरागिरी कर रहे हैं इधर. पोहा नहीं लाई आप? ठीक है, भुवन को पसंद है ये, तो अच्छा है. सूंघने में लहसुन बहुत है. नहीं, अब भुवन इतने बड़े स्टार बन के उनके लिए हम ऑमलेट लाए हैं, पोहा थोड़ा लाएंगे. हाँ वो भी है, हमें कौन ही पूछता है. I did a solo trip recently to Maldives, and I saw your video before going for that trip. क्योंकि I was just looking at कि कहाँ जाना चाहिए, और I really wanted to do a scuba diving course. तो मैंने सोचा it would be very helpful. And you have like a very nice two videos on budget travel and luxury travel. Yeah, budget and luxury. Which was very helpful. Watching. Wow, Yeah. I'm so happy to know that. Yeah, which was very helpful. I told my family that, you know what, I'll see you guys in a bit. I'm actually going for curly tails. And they were so excited. They were so excited. My mother and Sheetal were like, "Oh my God, wow, you're going on curly tails. कब आ रहा है? कब आ रहा है?" And I was like, "चलो ठीक है, let you know." Like, you have a huge fan following, and I'm so glad that you're having me on your show. I wish I had my curly hair today. I know. In fact, आज true curly tails episode होता है. I swear, but next time for sure. Next time for sure. I love the show, love the food, loved everything about it. Thank you. Thank you. Whoa, that was one heck of a Sunday brunch. Well, told ya, that was one stupendous season, and it's unfortunate we have to wrap. No, Kamiya, we're not going to let you go so quickly. Now what? Well, you always put your guests on the spot and borrow 59 seconds of their day. I guess now it's your turn. Okay, chalo, let's do it. Okay, let's go. Who has been your favorite guest on Sunday brunch? Virat Kohli. What's a meal that you've enjoyed eating? You know, Pooja Hegde took me to a really nice restaurant called Harish Lunch Home. Amazing Mangalorean food. Loved it. Okay, who's someone who's made you laugh out loud? So many of them.
But top of my mind, maybe Taapsee Pannu. She's really funny, and Sanya Malhotra. Who do you think was the best dressed for Sunday brunch? Always me. Now I sound like Kejo. Oh, you're very funny, huh? And who was the most honest interviewee? Kangana Ranaut. I mean, literally no pretense at all. She speaks her mind. All right, and who do you think was the biggest foodie on Sunday brunch? Sonakshi Sinha and again Taapsee Pannu. They both enjoy their food. So if you had to replay any of our Sunday brunches, who would it be with? Ajay Devgan and Kajol. I think it's one of our most viral videos. They were so much fun to be with together. Yeah, I think I'd like to do it with them again. We'll definitely go check that out. But tell us this, who was the most fun on screen and off screen? Nawazuddin, Pankaj Tripathi, and I have to add Ayushmann Khurrana, warmest, nicest person. I mean, he remembered everyone's name on the set. Tell me an actor you can call for Sunday brunch, just like that. See, if I name, then they will not come. So I will tell you offline. What's your go-to Sunday brunch? I love eating Sindhi curry, rice, and maybe pair it with some aloo tuk and bhindi. Okay, that was 59 seconds, Kamiya. Thank you for your time. Now you can continue what you were saying. Oh yeah, so all I was saying is remember to like, share and subscribe to Curly Tales and watch out for the brand new season of Sunday Brunch.